Hi, good afternoon, everyone. Any question during the webinar, I request you to please write it in the chat box. I'll keep on answering the same simultaneously. Okay. Any question, any doubt, you can write it in the chat box. So good morning, good afternoon, everyone. My name is Varun, and today we are going to talk about the job openings we have in Yes Bank. Right. So I'm from Timespro, Times Group Initiative. Yes, Ritesh, the opening is there with the Yes Bank, right? And I am going to explain you the openings we have today, plus the way we can apply for it, what is the process, what is the salary you'll be getting, and how you can apply, what are the documentation required, eligibility, and everything. Before I start, I would like to, tell you people that Times Pro is one of the initiative of Times of India group, right? We are an tech company which is into training, and we help the candidate in the mandatory training required whenever the bank is looking for candidate, right? In different locations, there is a basic criteria which needs to be matched. For example, the graduation, the kind of scores, open university, regular university, what is the kind of gap. So we check that, and then we help the candidates in getting the training for the same, right? And after the training is complete, the candidates, they go and they join the bank. So before I start, can I know that how many of you are aware of Times Group? Can you just go write it in the chat box? Can you people write in the chat box? Okay. So these are few of the name of the companies which belongs to the Times Group. Times Internet, Bharat Times, Famina, the Economic Times, Times Jobs, Filmfare, Radio Mirchi, Bennett University, etc. So as I told you earlier, that Timespro is one of the tech initiative of the group, right? We have helped more than 1,75,000 learners. As of now, we work with 500 plus hiring partners in India, right? 95% placement commitments has been fulfilled as of now. What we do is we tailor-made the uh, the programs which are required by the the banks or maybe the NBFCs, supply chain industry, hospitality. So whenever these companies they need people and there is a specific kind of training required before the candidates they join the bank, we give that. So that's the reason today we are hiring
people for Yes Bank Mumbai location, right? On behalf of Yes Bank. यस मनीषा, बैंक में जॉब लगता है, बट उसके लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा. सो वाई बैंक्स, लोग बैंक्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं उसका थोड़ा सा एक डेटा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. इंडिया में 1 लाख से ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हैं. प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, पीएसयू, सबको अगर आप मिलाओगे, फॉरेन बैंक्स मिलाओगे, 1,20,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में. इसका फायदा क्या है कि ये जो मार्केट है, इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है. जितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, अपकमिंग ब्रांचेस बहुत आ रही है. उससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी बैंक में 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत हेल्प मिलता है इस मार्केट में ग्रो करने के लिए. 57+ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस. 10,000 से ज्यादा एनबीएफसी की ब्रांचेज है इंडिया में. सो ओवरऑल अगर इस सेक्टर की अगर आप बात करें, तो इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग काम करते हैं. दूसरा, सेकंड, व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट बैंक्स, राइट, people they prefer working in private sector banks because एक तो the salary is higher, right? The promotion appraisals which happens every year is higher than government sector banks. मान लीजिए कि आप ग्रो कर रहे हो, आप एक बैंक में हो एंड यू आर डूइंग गुड. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि इफ अ गाय इज डूइंग बेटर देन अदर्स, तो उसके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. इफ यू कंपेयर विद द गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, maybe your seniors are given the chance first, even if they are doing good or bad, but the hierarchy is followed. But if you look at the private sector, it is not the same. It helps you grow better and faster if you are doing good in the bank, right? Of course, the salaries are on the higher side. Saket, the openings are only in Mumbai. But if you are from anywhere all over India, any place, you are okay to travel to Mumbai or maybe relocate to Mumbai, you can apply for this position. So let's talk a bit about Yes Bank, right? Yes Bank is a private sector bank. It's a fully commercial bank, one of the top 3 banks in India, right? Its headquarters is in Mumbai, and they offer a variety of products like a full-fledged any private sector bank. For example, they cater to MSMEs, they cater to the corporates, they cater to the retail, they cater to the individuals. For example, we go open bank account in the banks. If we need a car loan, home loan, for example, every and any kind of services which is given by any other big bank is given by the Yes Bank. Asta, the position is only for Mumbai. I repeat, this is only for Mumbai, not in Pune. If you want to apply for Mumbai, you can apply. Please stop writing this to me. The location will not change. Thank you. So we are hiring for senior officer profile in retail banking, right? What are the skills required to apply for this profile is you should have good written and verbal communication. Your networking and interpersonal skills should be good, right? And you should be able to maintain the confidentiality and the compliance of the bank. You should have a knowledge of retail banking, customer banking, and branch banking. So, Renzel, you're asking that is this the job opening for fresher or experienced candidate? So, Renzel, if you have an experience up to 1 year, you can apply. If you are a fresher, obviously you can apply as a fresher. But if you have an experience up to 1 year, 1.5 year, you can apply. Jay, there is no exam like SBI is required, but yes, there is going to be one internal exam for the bank.
So the job description is to acquire new customers, sourcing the quality current accounts, right? Cross sell. What is cross selling? For example, you are in a branch, somebody comes in to open an FD, you are offering him to apply or maybe invest in mutual funds, is cross selling. Or maybe a guy comes in asking for a 2 lakh rupees loan, you gave him a better deal asking to go for a 4 lakh rupees loan. So whenever you upsell something, and somebody is coming with a requirement, you try to give him different option, is cross selling or selling multiple products. Then of course you have to maintain a good relationship with the customers. Pragati, aptitude will not be there. And yes, Jagruti, it is going to be the sales opening, but it depends upon the bank which kind of a profile they are going to give you. But this opening is right now sales senior officer profile. And then of course, you have to pitch right product to the customers, activation of acquired customers. Activation of acquired customers means if, for example, there are 10 customers in the bank, किसी का ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है पर बैंकिंग नहीं कर रहा है, तो आपको उनसे बात करना है सो दैट वो कस्टमर जो है खाली अकाउंट ओपन नहीं करे, उसके बाद बिजनेस रेगुलेट करे बिजनेस में। उसके बाद सेल्स प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, केवाईसी नॉर्म्स ऑफ द बैंक एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपके केआरए में होंगी। तो बिफोर द इंटरव्यू वी विल कंडक्ट वन इंटरव्यू प्रिपरेशन राउंड। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे सीवी अपना शेयर करेंगे जिसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वी आर गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर ट्रेनिंग बिफोर यू एंटर इनटू द इंटरव्यू। Abhay, I am coming to the salary. So this is going to be the salary. 3 lakh rupees CTC per annum is going to be the salary which will be given to you. That is around 25,000 rupees for a month. Plus 4,500 rupees per month will be the travel reimbursement, because you will be going out in the market, meeting the customers to acquire new customers or maybe to service the old customers. 4,500 rupees per month will be given by the bank. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू यू। मान लीजिए एक टारगेट सेट किया है ब्रांच ने आपके लिए और आप वो टारगेट अचीव करते हो तो मंथली इंसेंटिव आपको मिलता है, राइट? सुरेश, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड, आप चैट में लिख दीजिए कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगा। जय, एंटायर सैलरी टारगेट बेस्ड नहीं है। योर सैलरी विल बी CTC 25,000 rupees फॉर अ मंथ, दैट इज 3 lakh rupees फॉर एन एनम, प्लस ट्रैवल रिइंबर्समेंट्स। इसके बाद जो आप सेल करते हो, जो टारगेट अचीव करते हो, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव एडिशनल मिलेगा। प्लस द मेडिक्लेम फॉर द स्पाउस एंड अप टू 2 kids, मतलब अगर कोई मैरिड है और उसके बच्चे हैं तो एक मेडिक्लेम बैंक देगा आपको। सो जो भी किसी भी बैंक में फैसिलिटीज उसके एम्प्लॉय को मिलती है वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगा। एंड the over and above you will be going to be the on roll employees of the bank। मतलब कोई थर्ड पार्टी रोल नहीं है, राइट, जिसमें कोई ऑफ रोल है या थर्ड पार्टी रोल नहीं है, ये बैंक का परमानेंट रोल है। प्रगति, ट्रैवलिंग विद इन द सिटी टू अक्वायर द कस्टमर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर आस्किंग एमकॉम किया है मिल जाएगा क्या, या कोई बीकॉम लिख रहा है, कोई बीबीए लिख रहा है, ठीक है? सो दिस इज द आंसर। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस स्लाइड। सो एनी फ्रेशर ग्रेजुएट with minimum of 45% marks in 10th 12th and graduation, मतलब 10th में 12th में और ग्रेजुएशन में तीनों में मिनिमम 45% आपके नंबर होने चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर आपका कोई ईयर गैप है, that gap can be maximum of 1 year. For example, you complete your 10th in 2020
and you complete your 12th in 2022, and then you complete your graduation in 2025, for example, right? So in place of 25, if somebody has completed in 2026, that means there is a gap. 10th और 12th करने में 2 साल लगते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल में पूरा किया है, या 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करने में 3 साल अगर लगते हैं, पर आपने 3 या 4 साल में वो कंप्लीट किया है, तब तक तो वो अलाउड है। अगर वो गैप 1 साल से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है। 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस अलाउड है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग मी कि अगर हमारा एक्सपीरियंस है क्या वो अलाउड है क्या, राइट? तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अलाउड है। योर एज शुड नॉट बी मोर देन 27 इयर्स। तो आप ये जो स्लाइड देख रहे हो इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, इसके अराउंड ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना गैप है, ये है, वो नहीं चलेगा। आप सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ या स्लाइड पे लिखा, आप उस पर ध्यान दो। 45% नंबर 10th 12th और ग्रेजुएशन में। अगर कोई गैप है तो मैक्सिमम 1 साल। आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो 2 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस अलाउड है, उससे ज्यादा का अलाउड नहीं है। फ्रेशर्स आर अलाउड, बट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 2 साल, उससे ज्यादा का अलाउड नहीं है। आपकी एज 27 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज आप अगर अप्लाई करते हो, बैंक में इंटरव्यू देने जाओगे, तो 27 साल से ऊपर अगर एज है, एक दिन भी अगर ऊपर है तो अलाउड नहीं है। उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग है, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है बैंक में, आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है बैंक से कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए और आके ज्वाइन कर लीजिए, तो 5 डेज का ट्रेनिंग आपका होगा, 8 आवर्स अ डे। सो सेकंड इंपॉर्टेंट स्लाइड इज दैट व्हाट इज द प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने के लिए? एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। हम सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, राइट? ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। 15 से 20 मिनट का टेस्ट होगा, उससे ज्यादा का नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस उसमें होंगे। अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा यस बैंक में। आपको फोन करके बताया जाएगा कि कौन सी ब्रांच में आपको जाना है, किस दिन जाना है, टाइमिंग्स क्या है, राइट? वहां पे हम लोग प्रेजेंट रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। बट 1 to 1 बैंक में इंटरव्यू होगा। प्रोग्राम का फीस, अगर आप मान लो सिलेक्ट हो जाते हो, तो देर इज अ फीस फॉर द ट्रेनिंग विच यू हैव टू पे। एलओआई आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दिस ट्रेनिंग इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल एंड फीस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। फीस सबमिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका ट्रेनिंग होगा। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 5 से 6 दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग बैंक में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। जो ट्रेनिंग फीस आपको इसका पे करना है आफ्टर योर सिलेक्शन विद द बैंक इज 29,500। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको पास लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है जिसमें लिखा रहेगा कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग। You complete the training with us and then you start the job with the bank. So the interested candidates can share their CV on this number and this email ID. जो बच्चा इंटरेस्टेड है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, वो मिस्टर जैद को अपना सीवी या तो व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। आपको फोन पे डिटेल लेना है, बात करनी है, तो आप इस नंबर पे पहले बात कर सकते हो। His number is 9424529420. Email ID is c-zaid.baggad
timesgroup.com। आप स्नैपशॉट ले लीजिए। औरंगाबाद में ओपनिंग नहीं है, और मिस्टर सौरभ गुंजल इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा देने के लिए। मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा। वी विल टेल यू दी लोकेशन कि आपको कहाँ जाना है। तो एक ही दिन जाना है, बार बार आपको नहीं जाना। पहले डॉक्यूमेंटेशन आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना है। कॉल वर्क नहीं है जय, इट इज नॉट अ कॉलिंग प्रोफाइल, इट इज अ सेल्स प्रोफाइल। तो डिपेंड करता है, आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, ब्रांच में जो कस्टमर्स आते हैं उनसे भी मिलना पड़ सकता है, मल्टीपल काम होगा। औरंगाबाद में ओपनिंग नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो बैंक आपसे बता देगा, बट अभी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो मुंबई में है। फीस विठल मैंने आपको बोला 29,500 इफ यू गेट सिलेक्टेड बाय द बैंक। Pragati, you will, so once you'll call, talk to Mr. Zad, he will tell you the location. Any question, any doubt, anyone, you can please write here. I will answer that. प्रमोद, कोल्हापुर में अभी तो ओपनिंग नहीं है, मे बी यू कैन गेट इन टच विद द काउंसलर। द मोमेंट वी हैव समथिंग इन कोल्हापुर विल लेट यू नो। Is job compulsory after training, or do we have a MOU after training? No. So Mr. Patil has written this. पाटिल चंद्रा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एमओयू साइन नहीं करना है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका ज्वाइनिंग आएगा। अगर आप खाली ट्रेनिंग करना चाहते हो तो ये यस बैंक का ट्रेनिंग नहीं है। मतलब इफ यू वांट कि ओनली ट्रेनिंग हो जाए बीएफएसआई में, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम आता है, बैंकिंग प्रो। You can apply for that program if you want to study BFSI. And after that, we give you option to apply in different banks like Yes Bank. You can talk to the counselor, he'll give you the idea on this. Akshay, you can apply for the loan. Once you get selected, you can apply. That's not a problem. 5 days training, Akash. 5 days online training, 8 hours each. It can be 5 to 7 days, but 5 days, 8 hours. Akansha, fees is after you get selected by the bank. ऑनलाइन पेमेंट होगा, वेबसाइट पे जाके पेमेंट होगा अविनाश। ऑफलाइन पेमेंट नहीं है। वंस यू गेट सेलेक्टेड, you have to apply on the website. After your result comes in case you get rejected, then they will know option of paying the fees. If in case you get selected, you receive the LOI, your account will show pay option, only then you can pay. So you people can apply, you will get a call. You can talk to the counselor, right? They will explain you, or there is a number on the screen. You can talk to the counselor here. This number is there on the screen. Email ID is there. You can email your CV or WhatsApp your CV. आकांक्षा, सांगली में अभी ओपनिंग नहीं है। Yes, Vittal, in case you get selected, you have to pay for the training. Any other question? Any other question, or we can wind up the session? Vittal, the number is given on the screen for detailed counseling. You please talk to the counselor.
Harsha, the training will be of for Yes Bank. The program the Yes Bank has designed about the bank, the kind of products you'll be selling, communication training, and there are a lot of other things. So this is designed by the Yes Bank. The same training we are going to give you. जो बैंक चाहता है कि ये ट्रेनिंग लेके आप बैंक ज्वाइन करें सो दैट उनको आपको ट्रेन नहीं करना पड़े, दैट सेम ट्रेनिंग इज देयर. Shubham, I think the questions are repeated. We can wind up the session. The same kind of questions are coming again and again.